श्रीजगदम्बिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। ऋषय ऊचुः आश्चर्यकरमे तत्ते वचनं गर्वहेतुकं संदेहोऽत्र समुत्पन्ना सर्वेषां नस्तपस्विनां माता व्यासस्य मेधाविन्नाम्ना सत्यवतीति च विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा सन्तनुना यथा तस्या पुत्रा कथं व्यासा सती स्वभवने स्थिता ईदृशी सा कथं राज्ञा पुनः सन्तनुना वृता तस्यां पुत्रावुभौ जातौ तत्त्वं कथय सुब्रत विस्तरेण महाभाग कथं परमपावनीम् उत्पत्तिं वद व्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतुकामा पुनः सर्वे ऋषया संसितव्रता। सूत उवाच प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्गप्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यस्योच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेनापि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः सम्यक् सर्वात्मना सर्वैः सर्वकामार्थसिद्धये स्मर्तव्या सर्वथा देवी वाञ्छितार्थप्रदायिनी। राजोपरिचरो नाम धार्मिका सत्यसंगरः चेदिदेशपति श्रीमान् बभूव द्विजपूजकः तपसा तस्य तुष्टेन विमानं स्फाटिकं शुभं दत्तमिन्द्रेण तत्तस्मै सुन्दरं प्रियकाम्यया तेनारूढस्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपतिः न भूम उपरिस्थोऽसौ तेनोपरिचरो वसुः विख्याता सर्वलोकेषु धर्मनित्या स भूपतिः तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुन्दरी पुत्राश्चास्य महावीर्या पञ्चाशन्नमितौजसः पृथक् देशेषु राजाना स्थापितास्तेन भूभुजा वसोस्तु पत्नी गिरिका कामान् काले निवेदयत् ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचिः तदः पितरश्चैनमुचुर्जहि मृगानिति तच्छ्रुत्वा चिन्तयामास भार्यामृतुमतीं तथा पितृवाक्यं गुरुं मत्वा कर्तव्यमिति निश्चितं चचार मृगयां राजा गिरिकां मनसा स्मरन् वने स्थिता स राजर्षिश्चित्ते सस्मारभामिनीम् अतीवरूपसम्पन्नां साक्षात् श्रियमिवापरां तस्य रेता प्रचस्कन्दा स्मरतस्तां च कामिनीं वटपत्रे तु तद्राजा स्कन्नमात्रं समाक्षिपत् इदं वृथा परिस्कन्नं रेतु वै न भवेत् कथं ऋतुकालं च विज्ञाय मतिं चक्रे नृपस्तदा अमोघं सर्वथा वीर्यं मम चैतन्यसंशयः प्रियायै प्रेषयाम्येतद् इति बुद्धिमकल्पयत् प्रियायै प्रेषयाम्येतद् इति बुद्धिमकल्पयत् शुक्रप्रस्थापने काले महिष्या प्रसमीक्ष्य सः अभिमन्त्र्याथ तद्वीर्यं वटपर्णपुटे कृतं पार्श्वस्थं सेनमाभास्य राजोवाच द्विजं प्रति गृहाणेदं महाभाग गच्छ शीघ्रं गृहं मम मत्प्रियार्थमिदं सौम्य गृहीत्वा त्वं गृहं नय गिरिकायै प्रयच्छासु तस्यास्त्वार्तवमद्य वै। सूत उवाच इत्युक्ता प्रदौ पर्णं सेनाय नृपसत्तमः स गृहीत्वोत्पपातासु गगनं गतिवित्तमः गच्छन्तं गगनं सेनं धृत्वा चञ्चुपुटे पुटं तमपश्यद् अथायान्तं खगं सेनस्तथा परः आमिषं स तु विज्ञाय शीघ्रमभ्यद्रवत्खगं तुण्डयुद्धमथाकाशे तौ उभौ सम्प्रचक्रतुः युध्यतुरपतद्रेतस्तच्चापि यमुनाम्भसि खगौ तौ निर्गतौ कामं पुटके पतिते तदा
एतस्मिन् समये काचिद् अद्रिका नाम चाप्सरा ब्राह्मणं समनुप्राप्तं सन्ध्यावन्दनतत्परं कुर्वन्ती जलकेलिं सा जले मग्ना चचार सा जग्राह चरणं नारी द्विजस्य वरवर्णिनी प्राणायामपरासोऽथ दृष्ट्वा तां कामचारिणीं सशाप भवमत्सि त्वं ध्वनविघ्नकरी यतः सा सप्ताभिप्रमुखेन बभूव यमुनाचरी सफरी रूपसम्पन्ना ह्यद्रिका च वराप्सरा सेनपादपरिभ्रष्टं तच्छुक्रमथवासवि जग्राह तरसावेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी अत कालेन कियता मत्स्यं तां मत्स्यजीवनः सम्प्राप्ते दशमे मासि बबन्ध तां मनोरमाम् उदरं विददारासु स तस्या मत्स्यजीवनः युग्मं विनिसृतं तस्माद् उदरान् मानुषाकृति। बाला कुमारा सुभगस्तथा कन्या शुभानना दृष्ट्वाश्चर्यमिदं सोऽथ विस्मयं परमं गता राज्ञे निवेदयामास पुत्रौ द्वौ तुजसोद्भवौ राजापि विस्मयाविष्टा सुतं जग्राहतं शुभं स मत्स्यो नाम राजासौ धार्मिका सत्यसंगरः वसुपुत्रो महातेजा पित्रातुल्यपराक्रमः कालिका वसुना दत्ता तरसा जलजीविने नाम्ना कालीति विख्याता तथा मत्स्योदरीति च मत्स्यगन्धेति नाम्ना वै गुणेन समजायत विवर्धमाना दासस्य गृहे सा वासवी शुभा ऋषय ऊचुः अद्रिका मुनिना सप्ता मत्सी जाता वराप्सरा विदारिता च दासेन मृता च भक्षिता पुनः किं बभूव पुनस्तस्या अप्सराया वदस्व तत् सापश्यान्तं कथं सूत कथं स्वर्गमवापसा सूत उवाच सप्ता यदा सा मुनिना विस्मिता संबभूवः स्तुतिं चकार विप्रस्य दीनेव रुदिति तदा दयावान् ब्राह्मणा प्राह तां तदा रुदतीं स्त्रियं माशोकं कुरु कल्याणी शापान्तं ते वदाम्यहं मत्क्रोधशापयोगेन मत्स्ययोनिं गता शुभे मानुषौ जनयित्वा त्वं शापमोक्षमवाप्स्यसि इत्युक्त्वा तेन सा प्राप मत्स्यदेहं नदीजले बालकौ जनयित्वा सा मृता मुक्ता च शापता संत्यज्य रूपं मत्स्यस्य दिव्यरूपमवाप्य च जगा मामरमार्गं च शापान्ते वरवर्णिनी एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगन्धावरानना पुत्रीव पाल्यमाना सा दासगेहे विवर्धत मत्स्यगन्धा तदा जाता किशोरी चाति सुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाणा वासवी चाति सुप्रभा। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीय स्कंधे मत्स्यगंधोत्पत्तिवर्णनम नाम प्रथमः अथ द्वितीयः व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत उवाच एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन् पाराशरो मुनिः आजगाम महातेजा कालिन्द्यास्तटस्मुत्तमम् निषादमाह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्रापयस्व परं पारं कालिन्द्या उडुपेन मां दासा श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे उवाच तां सुतां बालं मत्स्यगन्धां मनोरमाम् उडुपेन मुनिं बाले परं पारं नयस्विह गन्तुकामोऽस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगन्धाथ वासवी उडुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी ब्रजन् सूर्यसुता तो ये भावित्वाद्दैवयो गतः कामार्तस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्वा तां चारुलोचनां ग्रहीतुकामा स मुनिर्दृष्ट्वा व्यञ्जित यौवनां दक्षिणेन करेणैनां स्पृशद्दक्षिणे करे तमुवाचासितापाङ्गीं स्मितपूर्वमिदं वचः कुलस्य सदसंवाक्यं श्रुतस्य तपसश्च किं त्वं वै वसिष्ठदायादा कुलशीलसमन्विता किं चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः। दुर्लभं मानुषं जन्म भुवि ब्राह्मणसत्तम तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्मविच्च अनार्यभावं कथमागतोऽसि विप्रेन्द्र मां वेक्ष्य च मीनगन्धां मदीये शरीरे
द्विजामोघबुद्धे शुभं किं समालोक्य पाणिं ग्रहीतुं समीपं समायासि कामातुरस्त्वं कथं नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम् अहो मन्दबुद्धिर्द्विजोऽयं ग्रहीष्यन् जले मग्न एवाद्य मां वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पञ्चबाणातिविद्धं न कोऽपीह सक्ता प्रतीपं हि कर्तुम् इति संचित्य सा बाला तमुवाच महामुनिं धैर्यं कुरु महाभाग परं पारं नयामि वै। सूत उवाच पराशरस्तु तच्छ्रुत्वा वचनं हितपूर्वकं करं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सिन्धो पारं गता पुनः मत्स्यगन्धां प्रजग्राह मुनिकामातुरस्तदा वेपमानास्तु सा कन्या तमुवाच पुरस्थितं दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं नोपसङ्कसे समानरूपयो कामसंयोगस्तु सुखावह इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृतायोजनगन्धा तु सुरूपा च वरानना मृगनाभिसुगन्धां तां कृत्वा कान्तां मनोहरां जग्राह दक्षिणे पाणौ मुनिर्मन्मथपीडितः गृहीतु कामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा मुने पश्यति लोकोऽयं पिता चैव तटस्थितः पशुधर्मो न मे प्रीतिं जनयत्यतिदारुणः प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ यावद्भवति यामिनी रात्रौ विवायस उद्दिष्टो दिवा न मनुजस्य हि दिवासंगे महान् दोषा पश्यन्ते किल मानवा कामं यक्ष महाबुद्धे लोकनिन्दा दुरासदा तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या युक्तमुक्तमुदारधि निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तटेति तमसायुते कामिनी तं मुनिं प्राह मृदुपूर्वमिदं वचः कन्याहं द्विजशार्दूल भुक्त्वा गन्तासि कामतः अमोघवीर्यस्तं ब्रह्मन् का गतिर्मे भवेदिति पितरं किं ब्रवीम्यद्य सगर्भा चेद्भवाम्यहं त्वं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व तत्। पराशर उवाच कान्तेद्य मत्प्रियं कृत्वा कन्यैवं त्वं भविष्यसि वृणीष्व च वरं भीरूयं त्वमिच्छसि भामिनी। सत्यवती उवाच यथा मे पितरौ लोके न जानीतो हिमानद कन्याव्रतं न मे हन्यात् तथा कुरु द्विजोत्तम पुत्रश्च त्वत्समा कामं भवेद् अद्भुतवीर्यवान् गन्धोऽयं सर्वदा मे स्याद् यौवनं च नवं नवं। पराशर उवाच शृणुसुन्दरि पुत्रस्ते विष्णुवंशसम्भवाक् शुचिः भविष्यति च विख्यातस्त्रैलोक्ये वरवर्णिनि केनचित् कारणेनाहं जाता कामातुरस्त्वयि कदापि च न सम्मोहो भूतपूर्वौ वरानने दृष्ट्वा चाप्सरसां रूपं सदाहं धैर्यमावहं दैवयोगेन वीक्ष्य त्वां कामस्य वसगो भवं तत्किञ्चित् कारणं विद्धि दैवं मे दुरतिक्रमं दृष्ट्वाहं चाति दुर्गन्धां त्वां कथं मोहमाप्नुयां पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविद्भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये। सूत उवाच इत्युक्ता तां वशं यातां भुक्त्वा स मुनिसत्तमः जगाम तरसा स्नात्वा कालिन्दे सलिले मुनिः सापि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती सुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरं जातमात्रस्तु तेजस्वी तमुवाच सुमातरं तपस्यैव मना कृत्वा विवशे चातिवीर्यवान् गच्छ मातर्यथा कामं गच्छाम्यहमता परं तपा कर्तुं महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः मातर्यदा भवेत् कार्यं तव किञ्चिद् अनुत्तमं स्मर्तव्योऽहं तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनी स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तां सुखं वस इत्युक्त्वा निर्यौ व्यासा सापि पित्रन्तिकं गता द्वीपे न्यस्तस्तया बालस्तस्माद्वैपायनो भवत् जातमात्रो जगामासो वृद्धिं विष्णुवंशयो गतः तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तप उत्तमम् एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् चकार वेदशाखाश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कलेर्युगं वेदविस्तारकरणाद् व्यासनामा भवन्मुनिः
पुराणसंहिताश्चक्रे महाभारतमुत्तमं शिष्यान् अध्यापयामास वेदान् कृत्वा विभागसा सुमन्तुं जैमिनीं पैलं वैशम्पायनमेव च असितं देवलं चैव सुखं चैव सुमात्मजं। सूत उवाच एतच्च कथितं सर्वं कारणं मुनिसत्तमा सत्यवत्यासु तस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा संशयोऽत्र न कर्तव्या संभवे मुनिसत्तमा महतां चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनेरिति कारणाच्च समुत्पत्ति सत्यवत्या जसोदरे पराशरेण संयोगा पुनः सन्तनुना तथा अन्यथा तु मुनेश्चित्तं कथं कामाकुलं भवेत् अनार्यजुष्टं धर्मज्ञा कृतवान् स कथं मुनेः सकारणेयमुत्पत्ति कथिताश्चर्यकारिणी श्रुत्वा पापाच्च निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा य एतच्छुमाख्यानं शृणोति श्रुतिमान् नरः न दुर्गतिमवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीयस्कन्धे व्यासजन्मवर्णनं नाम द्वितीयः। अथ तृतीयः राजा शंतनु गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषय ऊचुः उत्पत्तिस्तुतया प्रोक्ता व्यासस्यामित तेजसा सत्यवत्यास्तथा सूत विस्तरेण त्वया नघ तथाप्येकस्तु सन्देहश्चित्तेऽस्माकं तु संस्थितः न निवर्तति धर्मज्ञ कथितेन त्वया नघ माता व्यासस्य या प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा सा कथं निवृत्तिं प्राप्ता शन्तनुं धर्मवित्तमं निषादपुत्रीं स कथं वृतवान् नृपतिः स्वयं धर्मिष्ठा पौरवो राजा कुलहीनाम संवृतां शन्तनो प्रथमा पत्नी काह्यभूत् कथयाधुना भीष्मपुत्रोऽथ मेधावी वसोरंसा कथं पुनः। त्वया प्रोक्तं पुरा सूत राजा चित्रांगदा कृता सत्यवत्या सुतो वीरो भीष्मेणामित तेजसा चित्रांगदे हते वीर्ये कृतस्तदनुजस्तथा विचित्रवीर्यनामासौ सत्यवत्या सुतो नृपः ज्येष्ठे भीष्मे स्थिते पूर्वं धर्मिष्ठे रूपवत्यपि कृतवान् स कथं राज्यं स्थापितस्तेन जानता मृते विचित्रवीर्ये तु सत्यवत्यति दुःखिता वधूभ्यां गोलकौ पुत्रौ जनयामास सा कथं राज्यं न भीष्माय ददौ स वरवर्णिनि न कृतस्तु कथं तेन वीरेण दारसंग्रहः अधर्मस्तु कृतः कस्माद् व्यासेनामित तेजसा ज्येष्ठेन भ्रातृभार्यायां पुत्रावुत्पादिताविति पुराणकर्ता धर्मात्मा स कथं कृतवान् मुनिः सेवनं परदाराणां भ्रातुश्चैव विशेषतः जुगुप्सितमिदं कर्म स कथं कृतवान् मुनिः शिष्टाचारा कथं सूत वेदानुमितकारकः व्यासशिष्योऽसि मेधाविन् सन्देहं छेत्तुमर्हसि श्रोतुकामा वयं सर्वे धर्मक्षेत्रे कृतक्षणाः। सूत उवाच इक्ष्वाकुवंशप्रभवो महाभिष इति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेन च तोषयामास देवेन्द्रं स्वर्गं प्राप्य महामतिः एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाभिषा सुरा सर्वे समाजग्मु सेवनार्थं प्रजापतिं गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुं विभुं तस्या वासा समुद्भूतं मारुतेन तरस्विना अधोमुखासुरा सर्वे न विलोक्यैव तां स्थिता राजा महाभिषस्तां तु निशंका समुपश्यत सापि तं प्रेम संयुक्तं नृपं ज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तौ प्रेम संयुक्तौ निर्लज्जौ काममोहितौ ब्रह्माचुकोपतौ तूर्णं ससाप च रुषान्विता मर्तलोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवं पुण्येन महताविष्टस्त्वमवाप्स्यसि सर्वथा गंगां तथोक्तवान् ब्रह्मा वीक्ष्य प्रेमवतीं नृपे विमनस्कौ तु तौ तूर्णं निःसृतौ ब्राह्मणोऽन्तिकात् स नृपाश्चिन्तयित्वाथ भूर्लोके धर्मतत्परान् प्रतीपं चिन्तयामास पितरं पुरुवंशजम् एतस्मिन् समये चाष्टौ वसवास्त्रीसमन्विताः वसिष्ठस्याश्रमं प्राप्ता रम्माणा यदृक्षया पृथ्वादीनां वसूनां च मध्ये कोऽपि वसूत्तमः देवृनामा तस्य भार्याथ नन्दिनीं गां ददर्शः दृष्ट्वा पतिं स पप्रच्छ कस्येयं धेनुरुत्तमा द्यौस्तु
तामाह वसिष्ठस्य गौरीयं शृणुसुन्दरी दुग्धमस्यापि वेद्यस्तु नारी वा पुरुषोऽथवा अयुतायुर्भवेन्नूनं सदैवागतयौवनः तच्छ्रुत्वा सुन्दरी प्राह मृत्युलोकेऽस्ति मे सखी उसी नरस्य राजर्षे पुत्री परमशोभना तस्या हेतुर्महाभाग सवत्सां गां पयस्वनीम् आनयस्वाश्रमं श्रेष्ठं नन्दिनीं कामदां शुभां यावदस्यापया पीत्वा सखी मम सदैव हि मानुषेषु भवेदेका जरारोगविवर्जिता तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या दौर्जहार च नन्दिनीम् अवमन्य मुनिं दान्तं पृथ्वाद्यैः सहितो नघा हृतायामथुकनन्दिन्यां वसिष्ठस्तु महातपा आजगामाश्रमपदं फलान्यादाय सत्वरः न पश्यत् यदाधेनुं सवत्सां स्वाश्रमे मुनिः मृगयामास तेजस्वी गौहरेषु वनेष्वपि नासादिता यदाधेनुश्चुकोपातिशयं मुनिः वारुणिश्चापि विज्ञाय ध्यानेन वसुभिर्हृतां वसुभिर्मे हृताधेनुर्यस्मान् मामवमन्य वै तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशयः एवं सशाप धर्मात्मा वसुस्तान्वारुणिः स्वयं श्रुत्वा विमनसा सर्वे प्रयुर्दुःखिताश्च ते सप्तास्म इति जानन्ता ऋषिं तमुपचक्रमुः प्रसादयन्तस्तमऋषिं बसवः शरणं गता मुनिस्ताना धर्मात्मा वसून्दीनान् पुरा स्थितान् अनुसंवत्सरं सर्वे शापमोक्षमवाप्स्यथ येनेयमृताधेनुर्नन्दिनी मम वत्सला तस्माद्यौर्मानुषे देहे दीर्घकालं वसिष्यति ते सप्तापति गच्छन्तीं गंगां दृष्ट्वा सरिद्वराम् ऊचुस्तां प्रणता सर्वे सप्तां चिन्तातुरां नदीं भविष्यामो वयं देवी कथं देवा सुधासना मानुषाणां च जठरे चिन्तेयं महती हीनः तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान् सरिद्वरे सन्तनुर्नाम राजर्षिस्तस्य भार्या भवा नघे जाताञ्जले चास्मान् निक्षिपस्व सुरापगे एवं साप विनिर्मोक्षो भविता नात्र संशयः तथेत्युक्ताश्च ते सर्वे जग्मुर्लोकं स्वकं पुनः गंगापि निर्गता देवी चिन्त्यमाना पुनः पुनः महाविशो नृपो जाता प्रतीपस्य सुतस्तदा सन्तनुर्नाम राजर्षिर्धर्मात्मा सत्यसंगरः प्रतीपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यामित तेजसा तदा च शैला तस्मान्निःसृता वरवर्णिनी दक्षिणं सालसङ्काशमूरुं भेजे शुभानना अंके स्थिता स्त्रियं चाह मा पृष्ट्वा किं वरानने ममोरावास्थितासि त्वं किमर्थं दक्षिणे शुभे सा तमाह वरारोहा यदर्थं राजसत्तम स्थितास्यङ्के कुरु श्रेष्ठ कामयानां भजस्व मां तामवोचदथो राजा रूपयौवनशालिनीं नाहं परस्त्रियं कामाद् गच्छेयं वरवर्णिनीं स्थिता दक्षिणमूरुं मे तुमाश्लिष्य च भामिनी अपत्यानां स्नुषाणां च स्थानं विद्य शुचिस्मिते स्नुषा मे भव कल्याणी जाते पुत्रेति वाञ्छिते भविष्यति च मे पुत्रस्तौ पुण्यान्न संशयः तथेत्युक्ता गता सा वै कामिनी दिव्यदर्शना राजा चापि गृहं प्राप्तश्चिन्तयस्तां स्त्रियं पुनः तथा कालेन कियता जाते पुत्रे वयस्विनी वनं जिगमिषु राजा पुत्रं वृत्तान्तमूचिवान् वृत्तान्तं कथयित्वा तो पुनरुचे निजं सुतं यदि प्रयाति सा बाला त्वां वने चारुहासिनी कामयाना वरारोहा तां भजेथा मनोरमां न पृष्टव्या त्वयाकाशे मनिन्नियोगान्नराधिप धर्मपत्नीं च तां कृत्वा भविता त्वं सुखी किल सूत उवाच एवं संदिश्य तं पुत्रं भूपति प्रीतमानसः दत्त्वा राज्यश्रियं सर्वां वनं राजा विवेशः तत्रापि च तपस्तप्त्वां समाराध्य पराम्बिकां जगाम स्वर्ग्यं राजासौ देहं त्यक्त्वा सुतेजसा राज्यं प्राप महातेजा सन्तनु सार्वभौमिकम्
प्रजां वै पालयामास धर्मदण्डो महीपतिः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीयस्कन्धे प्रतीप सकाशाक्षन्तनु जन्म वर्णनम नाम तृतीयः। अथ चतुर्थः गंगा जी द्वारा राजा संतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सूत उवाच प्रतीपेथ दिवं याते सन्तनु सत्यविक्रमः बभूव मृगयाशीलो निघ्नव्याघ्रान् मृगान्नृपः स कदाचिद्वने घोरे गंगातीरे चरन् नृपः ददर्श मृगसावाक्ष्यं सुन्दरीं चारुभूषणां दृष्ट्वा तां नृपतिर्मग्ना पितृक्तेयम्बरानना रूपयौवनसम्पन्ना साक्षाल्लक्ष्मीरिवापरा पिबन्मुखाम्बुजं तस्या न तृप्तिमगमन्नृपः हृष्टरोमाभवत्तत्र व्याप्तचित्त इवा नघा महाविशंसापि मत्वा प्रेमयुक्ता बभूवः किञ्चिन्मन्दस्मितं कृत्वा तस्था वग्रे नृपस्य च वीक्षतामसितापाङ्गीं राजा प्रीतमनाभृशम् उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वयन् श्लक्ष्णया गिरा देवी वा त्वं च वा मोरु मानुषी वा वरानने गन्धर्वी वाथ यक्षी वा नागकन्याप्सरापि वा यासि काशीवरारोहे भार्या मे भवसुन्दरी प्रेमयुक्तस्मि तैव त्वं धर्मपत्नी भवाद्य मे। सूत उवाच राजा तां नाभिजानाति गंगेयमिति निश्चितं महाविशंसमुत्पन्नं नृपं जानाति जाह्नवी पूर्वप्रेम समायोगात् श्रुत्वा वाचं नृपस्य ताम् उवाच नारी राजानो स्मृत्पूर्वमिदं वचः स्त्रीवाच जानामि त्वां नृपश्रेष्ठ प्रतीपतनयं शुभं कानवाञ्छति चार्वङ्गी भावित्वात् सदृशं पतिं वागवन्धे नृपश्रेष्ठ वरिष्यामि पतिं किल शृणु मे समयं राजन् वृणोमि त्वां नृपोत्तम यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषेध्या त्वया राजन्न वक्तव्यं तथा प्रियं यदा च त्वं नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचः तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्टदेशं मारिष स्मृत्वा जन्मवसूनां च प्रार्थनापूर्वकं हृदि महाविशस्य प्रेमातः विचिन्त्यैव च जाह्नवी तथेत्युक्ताथ सा देवी चकार नृपतिं पतिम् एवं वृत्ता नृपेणात गंगा मानुषरूपिणी नृपस्य मंदिरं प्राप्ता सुभगा वरवर्णिनी नृपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपवने शुभे सापि तं रमयामास भावज्ञा वैवरांगना न बुबोध नृपा क्रीडन् गतान् वर्षगणानथ स तया मृगसावाक्ष्या सच्चा सतक्रतुर्यथा सा सर्वगुणसम्पन्ना सोऽपि कामविचक्षणा रेमा ते मंदिरे दिव्ये रमा नारायणाविव एवं गच्छति काले सा दधार नृपतेस्तदा गर्भं गंगावसुं पुत्रं सुशुभे चारुलोचना जातमात्रं सुतं वारे चिक्षेपैव द्वितीयके तृतीयेथ चतुर्थेथ पंचमे षष्ठ एव च सप्तमे वाहते पुत्रे राजा चिन्तापरोऽभवत् किं करोम्यद्य वंशो मे कथं स्यात् सुस्थिरो भुवि सप्तपुत्रा हता नून मनया पापरूपया निवारयामि यदि मां त्यक्त्वा यास्यति सर्वथा अष्टमोऽयं सुसम्प्राप्तो गर्भो मे मनसीप्सितः न वारयामि चेदद्य सर्वथेयं जले क्षिपेत् भविता वा न वाचाग्रे संशयोऽयं ममाद्भुतः सम्भवेऽपि च दुष्टेयं रक्षेद्वा न रक्षयेत् एवं संशयिते कार्ये किं कर्तव्यं मयाधुना वंशस्य रक्षणार्थं हि यत्नकार्या परो मया तथा काले यदा जाता पुत्रोऽयमष्टमो वसुः मुनेर्येन हृता धेनुर्नन्दिने स्त्रीजितेन हि तं दृष्ट्वा नृपते पुत्रं तामुवाच पतन्पते
दासोऽस्मि तव तन्वङ्गे प्रार्थयामि शुचिस्मिते पुत्रमेकं पुषाम्येनं देहि जीवितमद्य मे हिंसिता सप्तपुत्रा मे करभो ऋतुया शुभा अष्टमं रक्ष शुश्रूणि पतामि तव पादयो अन्यद्वै प्रार्थितं तेद्य ददाम्यथ च दुर्लभं वंशो मे रक्षणीयोऽद्य त्वया परमशोभने अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेदविदो विदुः तस्मादद्य वरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमं सुतम् इत्युक्तापि गृहीत्वा तं यदा गन्तुं समुत्सुका तदाति कुपितो राजा तामुवाचाति दुःखितः पापिष्ठे किं करोम्यद्य निर्यान्यभिवेशि किं काशीपापकराणां त्वं पुत्री पापरता सदा यथेक्षं गच्छ वा तिष्ठ पुत्रो मे स्थीयतामिह किं करोमि त्वया पापे वंशान्तकरयानया एवं वदति भूपाले सा गृहीत्वा सुतं शिशुं गच्छन्ते वचनं कोपसंयुता तमुवाचः पुत्रकामा सुतं त्वेनं पालयामि वने गता समयो मे गमिष्यामि वचनं ह्यन्यथा कृतं गंगां मां वै विजानीहि देवकार्यार्थमागतां वसवस्तो पुरा सप्ता वसिष्ठेन महात्मना व्रजन्तु मानुषीं योनिं स्थितां चिन्तातुरास्तु मां दृष्ट्वेदं प्रार्थयामासुर्जननी नो भवानघे तेभ्यो दत्त्वा वरं जाता पत्नी ते नृपसत्तमा देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं जानीहि सम्भवो मम सप्त ते वसवा पुत्रा मुक्ता सापाद् ऋषेस्तु ते कियन्तं कालमेकोऽयं तव पुत्रो भविष्यति गंगादत्तमिमं पुत्रं गृहाण सन्तनो स्वयं वसुं देवं विदित्वैनं सुखं मोक्षं सुतोद्भवं गाङ्गेयोऽयं महाभाग भविष्यति बलाधिकः अद्य तत्र नयाम्येनं यत्र त्वं वै मया वृता दास्यामि यौवनप्राप्तं पालयित्वा महीपते न मातृरहिता पुत्रो जीवेन्न च सुखी भवेत् इत्युक्त्वान्तर्दधे गंगा तं गृहीत्वा च बालकं राजा चातीव दुःखार्ता संस्थितो निजमन्दिरे भार्याविरहजं दुःखं तथा पुत्रस्य चाद्भुतं सर्वदा चिन्तयन्नास्ते राज्यं कुर्वन् महीपतिः एवं गच्छति कालेत नृपतिर्मृगयां गतः निघ्नन् मृगणान् बाणैर्महिषान् शूकरानपि गंगातीरमनुप्राप्ता स राजा सन्तनुस्तदा नदीं स्तोकजलां दृष्ट्वा विस्मिता स महीपतिः तत्रापश्यत् कुमारं तं मुञ्चन्तं विशिखान् बहून् आक्रस्य च महाचापं क्रीडन्तं सरितस्तटे तं वीक्ष्य विस्मितो राजा न स्म जानाति किञ्चन नोपलेभे स्मृतिं भूपा पुत्रोऽयं मम वा न वा दृष्ट्वाप्यमानुषं कर्म बाणेशो लघुहस्ततां विद्यां वा प्रतिमां रूपं तस्य वै स्मरसन्निभं पप्रच्छ विस्मितो राजा कस्य पुत्रोऽसि चानघ नोवाच किंचित् वीरोऽसौ मुञ्चन् छिलिमुखानथ अंतर्धानं गतासोऽथ राजा चिन्तातुरोऽभवत् कोऽयं मम सुतो बाला किं करोमि व्रजामिकं गंगां तुष्टाव भूपाला स्थितस्तत्र समाहिता दर्शनं सा ददौ चाथ चारुरूपात् यथा पुरा दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं बभासे नृपतिः स्वयं कोऽयं गंगे गतो बालो मम त्वं दर्शयाधुना गंगोवाच पुत्रोऽयं तव राजेन्द्र रक्षितश्चाष्टमो वसु ददामि तव हस्ते तु गाङ्गेयोऽयं महातपा कीर्तिकर्ता कुलस्यास्य भविता तव सुब्रत पाठितस्त्वखिलान् वेदान् धनुर्वेदं च शाश्वतं वसिष्ठस्याश्रमे दिव्ये संस्थितोऽयं सुतस्तव सर्वविद्याविधानज्ञा सर्वार्थकुशला शुचिः यद्वेदजामदग्न्योऽसौ तद्वेदायं सुतस्तव गृहाण गच्छ राजेन्द्र सुखी भव नराधिप इत्युक्त्वान्तर्दधे गंगा दत्त्वा पुत्रं नृपाय वै नृपतिस्तु मुदा युक्तो बभूवाति सुखान्वितः समालिङ्ग्य सुतं राजा समाघ्राय च मस्तकं समारोप्य रथे पुत्रं स्वपुरं स प्रचक्रमे
गत्वा गजाह्वयं राजा चकारूत्सवमुत्तमं दैवज्ञं च समाहूय पप्रच्छ च शुभं दिनं समाहृत्य प्रजा सर्वा सचिवान् सर्वसा शुभान् यौवराज्येथ गाङ्गेयं स्थापयामास पार्थिवः कृत्वा तं युवराजानं पुत्रं सर्वगुणान्वितं सुखमास स धर्मात्मा न सस्मार च जाह्नवीं। सूत उवाच एतद्वा कथं सर्वकारणं वसुशापजं गाङ्गेयस्य तथोत्पत्तिं जाह्नव्या सम्भवं तथा गङ्गावतरणं पुण्यं वसूनां सम्भवं तथा या शृणोति नरा पापान् मुच्यते नात्र संशयः। पुण्यं पवित्रमाख्यानं कथितं मुनिसत्तमा यथा मया श्रुतं व्यासात् पुराणं वेदसंहितं श्रीमद्भागवतं पुण्यं नानाख्यानकथान्वितं द्वैपायनमुखोद्भूतं पञ्चलक्षणसंयुतं शृण्वतां सर्वपापघ्नं सुभदं सुखदं तथा इतिहासमिमं पुण्यं कीर्तितं मुनिसत्तमा। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीयस्कन्धे देवव्रतोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्थः। अथ पंचमः। मत्स्यगंधा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषय ऊचु वशोनां संभवा सूता कथिता शापकारणात् गाङ्गेयस्य तथोत्पत्ति कथिता लोमहर्षणे। माता व्यासस्य धर्मज्ञ नाम्ना सत्यवती सती कथं शन्तनुना प्राप्ता भार्या गन्धवती शुभा तन्ममाचक्ष विस्तारं दासपुत्री कथं वृता राज्ञा धर्मवरिष्ठेन संशयं छिन्दि सुव्रत। सूत उवाच शन्तनुर्नाम राजर्षिर्मृगया निरता सदा वनं जगाम निघ्नन्वयि मृगाश्च महिषान् रुरून् चत्वार्येव तु वर्षाणि पुत्रेण स भूपतिः रम्माणा सुखं प्राप कुमारेण यथा हरा एकदा विक्षिपन् बाणान् विनिघ्नन् खड्गसूकरान् स कदाचिद् वनं प्राप्ता कालिन्दीं सरिताम्बरां महीपरितनिर्देश्य माज्रिगद्गन्धमुत्तमं तस्य प्रभवमन्वीक्षन् सञ्चचार वनं तदा न मन्दारस्य गन्धोऽयं मृगनाभिमदस्य न चम्पकस्य न मालत्या न केतक्या मनोहरः न चानुभूतपूर्वोऽयं वाति गन्धवः शुभः कुतोऽयमेति वायुर्वै मम घ्राणविमोहनः इति सञ्चिन्त्यमानोऽसौ बभ्राम वनमण्डलं मोहितो गन्धलोभेन शन्तनुपवनानुगः स ददर्श नदीतीरे संस्थितां चारुदर्शनां शृङ्गाररहितां कान्तां सुस्थितां मलिनाम्बरां दृष्ट्वा तामसितापाङ्गीं विस्मिता स महीपतिः अस्या देहस्य गन्धोऽयमिति सञ्जातनिश्चयः। तदद्भुतं रूपमतीव सुन्दरं तथैव गन्धोऽखिललोकसम्मतः वयश्च तादृङ्नवयौवनं शुभं दृष्ट्वैव राजा किल विस्मितोऽभवत् केयं कुतो वा समुपागताधुना देवाङ्गना वा किमु मानुषी वा गन्धर्वपुत्री किल नागकन्या जाने कथं गन्धवतीं नु कामिनीं। सञ्चिन्त्य चैवं मनसा नृपोऽसौ न निश्चयं प्राप यदा तथा स्वयं गङ्गास्वरन् कामवशं गतोऽथ पप्रच्छ कान्तां तटसंस्थितां च काशीप्रिये कस्य सुतासि कस्माद्दिह स्थिता त्वं विजिने वरोरु एकाकिनी किं वदच्चारुनेत्रे विवाहिता वा न विवाहितासि सञ्जातकामो हमरालनेत्रे त्वां वीक्ष्य कान्तां च मनोरमां च भोहि प्रिये यासि चिकीर्षसि त्वं किं चेति सर्वं मम विस्तरेण इत्येवमुक्त्वा सुदती नृपेण प्रोवाच तं सस्मितमम्बुजेक्षण दासस्य पुत्रीं त्वमवेहि राजन् कन्यां पितुशासनं संस्थितां च तरीमिमां धर्मनिमित्तमेव संवाहयामि जले नृपेन्द्र पिता गृहे मेद्य गतोऽस्ति कामं सत्यं ब्रवीम्यर्थपते तवाग्रे इत्येवमुक्त्वा विरराम बाला कामातुरस्तां नृपतिर्बभासे कुरु प्रवीरं कुरु मां पतिं त्वं वृथा न गच्छेन्ननु यौवनं ते
न चास्ति पत्नी मम वै द्वितीया त्वं धर्मपत्नी भव मे मृगाक्षी दासोऽस्मि तेऽहं वसगा सदैव मनो भवस्तापयति प्रिये माम्। गता प्रिया मां परिहृत्य कान्ता नान्याभृताहं विदुरोऽस्मि कान्ते त्वां वीक्ष्य सर्वा वैवातिरम्यां मनो हि जातं विवशं मदीयं श्रुत्वा मृतास्वादरसं नृपस्य वचोतिरम्यं खलु दासकन्या उवाच तं सात्विकभावयुक्ता कृत्वातिधैर्यं नृपतिं सुगन्धा यदात्तराजन्मयि तत्तथैव मन्येऽहमे तत्तु यथा वचस्ते नासि स्वतन्त्रा त्वमवेहि कामं दाता पिता मेऽर्थयत्तं त्वमासु न स्वैरिणीहास्म्यपि दासपुत्रे पितुर्वशेऽहं सततं चरामि स चेद्ददाति प्रथिता पिता मे गृहाणपाणिं वसगास्मि तेऽहं मनो भवस्त्वां नृप किं दुनोते यथा पुनर्मां नवयौवनां च दुनोति तत्रापि रक्षणीया धृतिकुलाचार परम्परासु। सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तस्या नृपति काममोहिता गतो दासपतिर्गेहं तस्या याचनहेतवे दृष्ट्वा नृपतिमायान्तं दासोऽति विस्मयं गता प्रणामं नृपते कृत्वा कृताञ्जलिरभाषत। दास उवाच दासोऽस्मि तव भूपाल कृतार्थोऽहं तवागमे आज्ञां देहि महाराज यदर्थ मे चागमः। राजोवाच धर्मपत्नीं करिष्यामि सुतामेतां तवानघ त्वया चेद्दीयते मह्यं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। दास उवाच कन्यारत्नं मदीयं चेद् यत्त्वं प्रार्थयसे नृप दातव्यं तु प्रदास्यामि न त्वदेयं कदाचन तस्या पुत्रो महाराज तुदन्ते पृथिवीपतिः सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्यः पुत्रस्तवेति वै। सूत उवाच श्रुत्वा वाक्यं तु दासस्य राजा चिन्तातुरोऽभवत् गाङ्गेयं मनसा कृत्वा नोवाच नृपतिस्तदा कामातुरो गृहं प्राप्तश्चिन्ताविष्टो महीपतिः न सस्नौ बुभुजेनाथ न सुस्वापगृहं गतः चिन्तातुरं तु तं दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा गत्वा पृच्छन्महीपालं तत्सन्तोषकारणं दुर्जया कोऽस्ति शत्रुस्ते करोमि वसगं तव का चिन्ता नृपशार्दूल सत्यं वद नृपोत्तम किं तेन जातेन सुतेन राजन् दुःखं न जानाति न नाशयेद्यः ऋणं ग्रहीतुं समुपागतोऽसौ प्राग्जन्मजं नात्र विचारणास्ति विमुच्य राज्यं रघुनन्दनोपेताताज्ञया दाशरथिस्तु रामः वनं गतो लक्ष्मणजानकीभ्यां सहैव शैलं किल चित्रकूटं सुतो हरिश्चन्द्रनृपस्य राजन् यो रोहितश्चेति प्रसिद्धनामा क्रीतोऽथ पित्रा विपडोद्यतश्च दासार्पितो विप्रगृहे तु नूनं तथा जिगर्तस्य सुतो वरिष्ठो नाम्ना सुनासेपैति प्रसिद्धा क्रीतस्तु पित्रा पितयूपबद्धा सम्मोचितो गादिसुतेन पश्चात् पित्राज्ञया जामदग्नेन पूर्वं छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धम् अकार्यमप्याचरितं च तेन गुरुरनुज्ञा च गरीयसी कृता इदं शरीरं तव भूपतेन क्षमोऽस्मि नूनं वद किं करोम्यहं न शोचनीयं मयि वर्तमानेऽप्यसाध्यमर्थं प्रतिपादयाम्यदः। प्रभुहि राजस्तव कास्ति चिन्ता निवारयाम्यद्य धनुर्गृहीत्वा देहेन मे चेच्चरितार्थता वा भवत्वमोघा भवतश्चिकीर्षा धिक्तं सुतं या पितुरीप्सितार्थं क्षमोऽपि सन् प्रतिपादयेद्यः जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिन्तामि समुद्धरेद्यः। सूत उवाच निशम्येति वचस्तस्य पुत्रस्य सन्तनुर्नृपः लज्जमानस्तु मनसा तमाह त्वरितं सुतं राजोवाच चिन्ता मे महति पुत्र यस्त्वमेकोऽसि मे सुतः शूरोऽति बलवान् माने संग्रामे स्वपराङ्मुखः एकापत्यस्य मे ताता वृथेदं जीवितं किल मृते त्वयि मृधे क्वापि किं करोमि निराश्रयः एषा मे महती चिन्ता तेनाद्य दुःखितोऽस्म्यहं नाना चिन्तास्ति मे पुत्र यां तवाग्रे वदाम्यहं। सूत उवाच तदा कर्णाथ गाङ्गेयो मन्त्रिवृद्धा न पृच्छत न मां वदति भूपालो
याद्य परिप्लुतः वित्तवार्तां नृपस्याद्य पृष्ट्वायुवं विनिश्चियात् सत्यं ब्रुवन्तु मां सर्वं तत्करोमि निराकुलः तच्छ्रुत्वा ते नृपं गत्वा संविज्ञाय च कारणं संसुरविदितार्थस्तु गाङ्गेयस्तदचिन्तयत् सहितस्तैर्जगामासु दासस्य सदनं तदा प्रेमपूर्वमुवाचेदं विनम्रो जाह्नवीसुतः गाङ्गे उवाच पित्रे देहि सुतां तेद्य प्रार्थयामि सुमध्यमां माता मे सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्या परन्तप दास उवाच तं गृहाण महाभागा पत्नीं कुरु नृपात्मज पुत्रोऽस्यान्न भवेत् राजा वर्तमाने त्वयीति वै गाङ्गे उवाच मातेयं मम दास्येयि राज्यं नैव करोम्यहं पुत्रोऽस्या सर्वथा राज्यं करिष्यति न संशयः दास उवाच सत्यं वाक्यं मया ज्ञातं पुत्रस्ते बलवान् भवेत् सोऽपि राज्यं बलान्नूनं गृह्णीयादिति निश्चयः गाङ्गे उवाच नदारसंग्रहं नूनं करिष्यामि सर्वथा सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतं श्रुत उवाच एवं कृतां प्रतिज्ञां तु निशम्य झषजीवकः ददौ सत्यवतीं तस्मै राज्ञे सर्वाङ्गशोभनाम् अनेन विधिना तेन वृता सत्यवती प्रिया न जानाति परं जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीयस्कन्धे देवव्रतप्रतिज्ञावर्णनं नाम पंचमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।